Hey, it's me. What's with the units heading down 3rd? Looks like our old friend Herman Schultz is at it again. Shocker. Didn't he just get paroled? Yeah, well, guess it didn't take. No worries. Herman's just a big cupcake. I'll have him back in Rikers by bedtime. Just had dinner with my ex after saving her from masked criminals. And now I'm gonna go beat up a maniac who uses shockwaves to rob people. What a perfectly normal life you have, Peter Parker. Hey, welcome back to Gizmo Guruji और आप देख रहे हैं PS4 exclusive Spiderman gameplay walkthrough part 5 और इतने तगड़े एक्शन के बाद हम लोग गए थे kind of a date with Mary Jane जो हमें अब बीच में छोड़ के शॉकर से निपटने जाना पड़ेगा क्योंकि वो जेल या कहीं से भाग गया यूरी बोल रही है तो वी आर गोइंग टू फेस ऑफ अगेंस्ट शॉकर राइट नाउ। शॉकर बहुत ही तगड़ा विलन है वैसे तो मज़ा आएगा अब। वैसे आप में से कितनों को मज़ा आ रहा है स्पाइडरमैन गेम प्ले में इस कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर आप कुछ और करते हुए मुझे देखना चाहते हो वो भी बताइए कमेंट सेक्शन में। हे और गाइस अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को हिट करके ऑल दबाइए ताकि जब भी मैं नया वीडियो डालूँ आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और कोई भी नया वीडियो आपसे मिस ना हो। अरे यार बड़े दूर में है, मैं तो कोशिश कर रहा हूँ जितने जल्दी स्विंग कर पाऊँ। वैसे मेरी स्पीड ठीक ही है। Available units, report of an assault in progress. Officers near Bowery, please respond. Peter, I just want to make sure you haven't left any equipment you've built for your friend around the lab. It's no bother to me, but if the grant committee stops by again... Don't worry, Doc. I make a point not to leave anything there. But I know my friend appreciates you looking out for him. There's a lot of people who don't like him very much. That buffoon Jameson and his audience of sheep? Please. The people who do great things in this world are those who don't let bullies like him stand in their way. People like us. You said a mouthful, Doc. Take care. तो डॉग का कॉल आ गया था इसलिए रुकना पड़ा। पुलिस यहाँ पे वेट कर रही है। चलो चलते हैं अब देखने शॉकर क्या उत्पाद मचा रहा है। Hi, Herman. Seriously? Give it up! You're never gonna catch me! That's what you said last time. I don't want to hurt you! You'll just slow me down! Wow, that's considerate. मतलब इतने बार इसको पीट चुका है फिर भी ये बाज नहीं आ रहा What's ये the money बंदा। for, Herman? What do you care? Actually, I don't. Just trying to make polite conversation. I'm done talking! But this could be so much more rewarding if we connected on an emotional level. Wait, I forgot. You don't have emotions. Come on, Herman. At least talk to me so we can make it interesting. Herman? What? The only answer to Shocker now? Mr. Shocker? खेल खत्म अब बस अब पकड़ता हूँ। Gotcha. Now let's talk. I said I'm done talking! Noted. Honestly, Herman, why are you robbing again? You know the police are watching your every move. I mean, we all know you're kind of dumb, but I didn't think you were this dumb. You must be desperate, which means you're not just stealing for yourself. You must be working with someone, or for someone. You can tell me who it is now, or make me punch it out of you later. Your choice. Said enough! ओ तेरी शॉकवेव फेंक दिया इसने। अब तो छोड़ूंगा नहीं इसको। बहुत हो गया मजाक। छू के निकला पिछला वाला तो। बस अब तू जमीन में आ जा। And here we go.
हर बार नहीं होता है, एवरी डे इज नॉट संडे बॉस। एक बार मार दिया तो दूसरी बार भी मारेगा क्या? ये ले, यू मिस्ड। हा। अब बस खेल खत्म। You know what, Herman? You have like zero personality, but your suit is awesome. Can we talk design details? मजा आया तो लाइक ठोको। Maybe later. Good work, Spider-Man. Did you learn anything about his motive? I tried, but he's not very talkative. Plus, I think he hates me. You have that effect on a lot of people. But you love me, right, Yuri? I tolerate you. Wow. That might be the nicest thing you've ever said to me. वाह, यूरी भी तारीफ कर रही है। हमें शॉकर से पता नहीं चला कि what is he up to। आगे देखते हैं। Looks like I got some free time. Maybe now's a good time to look into that mask. Oh, it's MJ. Hey, MJ. You're up late? Just catching up on the news. Looks like you had quite an adventure with Shocker tonight. Yeah, he was unusually combative. Anyway, thanks again for dinner. What do I owe you? How about a favor? You still have that mask from the gallery? Yeah. I'm actually on my way to the Feast Center now to ask Martin Lee about it. Martin Lee? Why? He has a degree in art history. If anyone knows about the origins of that mask, he will. Just keep me in the loop. Like I said, I think there's a bigger story here, and I plan to be the one to break it. Sure. So I can call you, like, whenever? Yeah, whenever, whatever. So I guess we're talking again. Cool. चलो, मैरी जेन अब बोल रही है कभी भी उसको फ़ोन कर सकते हैं। और अब मार्टिन ली के पास जाना है मास्क के बारे में जानकारी लेने, क्योंकि उसने कुछ पढ़ा है, कुछ स्टडीज़ की है इसके ऊपर, एंशिएंट चाइनीज़ हिस्ट्री के ऊपर में भी। तो देखते हैं वो क्या बोलता है इस मास्क के बारे में। और अपना लौंडा तो खुश हो गया अपनी एक से बात करके। क्या बात है? Peter, good news. I think I smoothed things over with the grant committee. If Lance Corporal Texador's fitting tomorrow goes well, we should be okay. That's fantastic, Doc. We're back on track. Provisionally, as long as our little incident escaped the mayor's attention. You'll be at the fitting tomorrow? Definitely. It'll go great. We're gonna change the world, Doc. I'll settle for not starting any more fires. See you tomorrow, Peter. Here's to a successful day. वाह, तो दो खुशखबरी है बॉस। पहला तो एक्स के साथ बातचीत वापस से चालू हो गई और दूसरा ऑटो ने भी ग्रांट कमेटी को मना लिया है। क्या बात। Almost morning. Mr. Lee will be here soon. I could use a snack. तो मिस्टर ली के लिए वेट करते हैं खाते खाते। Mr. Lee's usually in his office now. तो मिस्टर ली के ऑफिस चलते हैं, वो उधर ही होंगे अभी। सुबह सुबह उधर ही रहते हैं। फीस्ट शेल्टर होम। वैसे मिस्टर ली और आंट में कितना अच्छा काम कर रहे हैं होमलेस लोगों को देख के। उनका रहना, उनका खाना, सब कुछ यहाँ देख रहे हैं। ये रहा मिस्टर ली का ऑफिस, डायरेक्टर लिखा हुआ है बाहर। ओके, अंदर वो दिख भी रहे हैं बैठे हुए हैं। चलो चलते हैं अंदर। Peter, what can I do for you? Sorry to bother you, Mr. Lee. I have a friend, Mary Jane. She's a reporter. She's doing a story on art imports, and she found this piece. She wanted an expert opinion on it, and I know you have a degree. And this might be the first time I actually get to use it. Let's see what you have. Interesting. Where did she find it? I'm really not sure. Why? What is it? A replica of an antique Chinese opera mask. I haven't seen one in years. This symbol here roughly translates to demon. Demon? My father read me ghost stories with that mask and symbol in it when I was young. Scared the hell out of me. Peter, listen. That mask,
it could be connected to dangerous people. Mary Jane might want to find a different story. Do you think she's in trouble? I don't know. Why take the risk? Hey, The symbol inside the mask means demon. It really spooked Mr. Lee. Never seen him like that. He even said you should drop the story. fat chance. Do you think Mr. Lee knows more than he's letting on? No, I think he just had a weird flashback or something. I know his childhood was pretty traumatic. Yeah, makes sense. Demons, huh? Catchy name. Okay, gotta get writing. See you soon. Well, that went about as well as I could have hoped. तो demons से related है वो mask. Not bad. कैसा फ्लैशबैक में चले गया था मिस्टर ली बोलते बोलते, जैसे कि डरा हुआ था कुछ. खैर निकलते हैं यहाँ से. एक बार आंट में के ऑफिस में चेक कर लेता, अगर वो हो तो उनसे मुलाकात कर लेंगे. Looks like May's not in yet. नहीं है. तो चलो निकलते हैं यहाँ से. Got some time to kill before Doc needs me at the lab. Let's do a little Spidey workout in the city. वो आंट में क्यों कॉल कर रही है? Peter, Mr. Lee spoke to me. He seemed worried. Are you into something dangerous? Oh, it's just a story Mary Jane's investigating. Don't worry, I'll make sure she's careful. Please tell me you two are back together. We're talking again. Baby steps. I hope I didn't upset Mr. Lee. He's just concerned. I was actually touched by how concerned. I knew he liked you. He admires how dedicated you are to helping others. I think you remind him of himself when he was younger. Both orphans, both so smart. Well, the admiration's mutual. You've got a good boss, May. I'll tell him you said so. Love you, Peter. ये लो ऑटो का भी फोन आ गया. Hello? Peter, it's Dr. Octavius. Oh, hey, what's up? Lance Corporal Texador is here for a fitting. I totally forgot. I didn't forget. I'll be there soon. This tardiness is starting to become a pattern. Come on, Parker. You're better than this. He's right. How did I lose track of time? हाँ ठीक है, स्पाइडरमैन है बॉस. उसको भी तो रेस्ट चाहिए, वो भी तो थक जाता है, इतना मेहनत करता है बेचारा. अब डॉक्टर ऑक्टेवियस को भी नहीं पता वो स्पाइडरमैन है, तो ठीक है. तो डॉक्टर ऑक्टेवियस बोल रहे कोई फिटिंग के लिए आया हुआ है, प्रोस्थेटिक्स के लिए, इसलिए जल्दी बुला रहा है. उसका टाइम आज का था और एज यूजुअल स्पाइडरमैन यानी कि पीटर पार्कर लेट हो चुका है, जिसकी वजह से वो गुस्सा भी कर रहा था बहुत. I'm flying pretty close to blind. Ought to look for towers to activate. ओ बॉय, ये टावर्स और ये जल्दी से ख़त्म करना होगा. इस मिशन के बाद वही ख़त्म करेंगे. टावर्स सारे एक्टिवेट करने हैं. एकदम उनके छत में लैंड करूंगा मैं. 1 2 3 एंड गो. ओह ये चलो लेट्स गो इन. स्टाइल बहुत मार लिया. चलो कॉस्ट्यूम चेंज करके डॉक्टर के कपड़ों में रेडी हो गए हैं, लैब टेक्नीशियन के कपड़ों में. And here we go. How does it work? Just like a natural arm. You think of what you want it to do, and... Yes. Hey, what do you think you're doing? This site's been declared a safety hazard. Stop that right now! This is highly sensitive equipment. That's it. I'm calling the mayor's office directly. Peter Parker,
How the hell are you? Speak of the devil. Mr. Osborn. Oh, please. How long have we known each other? It's Mr. Mayor. It's Norman. Norman! Norman, what do you think you're doing? The grant agreement you signed has strict safety provisions. This isn't your first violation. Those were excused. By me. We should have confiscated this equipment long ago. But I've had a breakthrough. Thank you for your great service to our country. These folks will escort you to Oscorp Robotics, where you'll receive the latest in prosthetics. No charge. This isn't about safety infractions, is it? I'm trying to help you, Otto. You're free to continue your work in a secure environment. At Oscorp. You always were the smartest guy in the room. You haven't changed a bit. Neither of you. Hey, Peter. Harry will be coming back from Europe early next year. Maybe the two of you can start that business you always talked about. This is opportunity knocking. Easy. They didn't take everything. Maybe we could start over. Peter. There's no we. Without the grant from the city, I can no longer pay you. I need some time to think. If I were you, I'd look for a new job. ये लो, तो मेयर ऑसबॉर्न आके सब कुछ तहस महस कर दिए हैं. ऑटो का काम पूरा का पूरा बंद हो गया है. तो अब स्पाइडरमैन भी जॉबलेस हो चुका है बेचारा. Wish I could do something to help Doc. Maybe call Harry. Ask him to talk to his dad. No. Norman never listens to Harry. Even tried to kill funding for his research stations. Hey, one of those stations is nearby. Should see how they're doing while Harry's in Europe. There must be some way to help Doc. I'll think of something. चलो स्पाइडरमैन तो कुछ सोचेगा. फिलहाल चलते हैं हैरी के पैशन प्रोजेक्ट की तरफ. वो क्या कहना चाह रहा है. नौकरी तो नहीं रही, टाइम पास ही कर लेते हैं. Harry left me a message about these before he left for you. Pete, hey, I need a favor. My mom's pet project was research stations that could benefit the public. Now, I launched them, but now that I'm away, Oscorp's gonna shut them down unless they prove their value. I was hoping you could watch them. I left details in each one. Thanks, man. As long as they're here, it's like a part of my mom is, too. Well, it's not gonna pay the bills, but it sounds like it means a lot to him. I'll do what I can to help. I've got a couple stations measuring air pollution. The idea is to catch the, contaminants before they reach toxic levels. Between you and me, I think Oscorp wants this to fail because it might show they're polluting. The amount of polycyclic hydrocarbons in the air is way too high. And rising. If it keeps getting worse, people could die. Particles are concentrating in trouble spots, like mini clouds of smog. I'll swing through them and get samples, then trace them to the source. तो इन सब पोल्यूशन के क्लाउड से स्विंग करके जाना है. ये हैरी के कोई पैशन प्रोजेक्ट है जिससे उसकी माँ की याद जिंदा रहेगी. क्योंकि वो टाउन में नहीं है तो वो पीटर पार्कर से बेस्ट फ्रेंड है, मदद मांग रहा है. For these clouds to be visible to the naked eye, the level of toxins must be up there. And gotcha!
ओके, तो ज़्यादा कुछ नहीं करना है, क्लाउड्स के ऊपर से स्विंग करके या इसके ऊपर से निकलना है ताकि वो सैम्पल्स कलेक्ट कर पाए हैरी के प्रोजेक्ट के लिए, ताकि दिखा पाए कि इतना पोल्यूटिंग हो रहा है इन सब चीज़ों से। Well, good samples of bad stuff anyway. इसे क्या क्या करना पड़ता है बॉस। वैसे एक बात सोचने वाली है, हैरी ने पीटर को ये काम दिया था और पीटर तो हैरी जानता नहीं कि स्पाइडरमैन है, तो पीटर कैसे इन सब क्लाउड से ये सब सैंपल्स उठा पाता। सोचने वाली बात है, एक बार आप सोचना। तो ये एक बहुत बड़ा फ्लॉ है बॉस। क्यों, मानते हो कि नहीं? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। एंड हमने और एक क्लाउड से सैंपल ले लिया है। I must be freaking these people out. What else is new? इसमें चढ़ के स्विंग करता हूँ। नहीं, ऊपर से निकल गया मैं। कम ऑन। हाँ, और मोमेंटम लेना होगा ऊंचे से। ओके, कम ऑन। डायरेक्ट खाली इस बिल्डिंग के ऊपर चढ़ के उसके ऊपर कूद जाता हूँ, बेटर रहेगा मेरे ख्याल से। एंड हियर वी गो। यस। The toxin's coming from 2 types of cars and a faulty smokestack. I better get photos. तो 2 गाड़ियों से इतना पोल्यूशन निकल रहा है और हमें दोनों की फ़ोटो चाहिए, और एक स्मोक स्टैक है, उसको लास्ट में हम लोग पकड़ेंगे। पहले दोनों गाड़ियों की फ़ोटो ले लेते हैं जल्दी से। ओके, ये रही गाड़ी, कैमरा भी ऑन है। वेब शूटर क्यों चला रहा हूँ मैं? ओहो, कम ऑन, हाउ स्टूपिड। फ़ोटो लेना और मैं वेब शूटर। चलो हो गया, अब दूसरे के पास चलते हैं। meters away. वैसे स्पाइडरमैन को देख के गाड़ी रुक जानी चाहिए थी, बदतमीज। गाड़ी फिर भी चलाया जा रहा था, गाड़ी उठा लेनी चाहिए थी वैसे मुझे उसकी। एंड ये रहा कैमरा ऑन। वापस से मैंने वेब शूटर ऑन कर लिए, फोटो लेना है। परफेक्ट, यस हो गया। अब चलते वो स्मोक स्टैक की तरफ, जो पाइप धुआं छोड़ रही है। वो इससे तो होके ही निकले थे हम लोग, क्लाउड्स भी इसी के पास थे। एंड वाह, ऊपर ही लैंड किया, क्या बात है। चलो इसका भी फोटो हो गया। Best smokestack picture I ever took. The Department of Environmental Protection will take it from here. Maybe I should make a green spider costume for Earth Day. So mission complete, guys. Mission का नाम था Harris snapping Station up just stopped a smog. public health crisis. Okay. Oscorp's gonna have a hard चलो time हैरी arguing का it's not फेवर हम useful. लोग ने कर दिया। I'm flying pretty close to blind. Ought to look for towers to activate. अरे हाँ यार, टावर्स भी एक्टिवेट करना है, करते हैं उसके बाद। Spider-Man, Shocker has escaped, and now he's robbing a bank on East 31st. What happened? I thought he was behind bars. He was, but one of the guards just walked up to his cell and released him, then gave him his suit back. I knew Shocker was working for someone. What did he get out of the guard? Wish I could ask him, but he's dead. Whoever made him release Shocker didn't want any loose ends. Damn. Looking at the security footage, the guard was in some kind of trance. And it might have been the lighting, but it looked like his eyes were glowing. Well, that's creepy. Okay, I'll see what I can get out of Shocker when I get to the bank. तो शॉकर जेल से छूट चुका है, जैसा कि आपने सुना, यूरी बोल रही है, और उसको वहाँ के किसी गार्ड ने निकाला था जो कि हिप्नोटाइज था या कोई ट्रांस में था, और उसके आँख चमक रहे थे, मतलब ग्लो कर रहे थे बेसिकली। और जिस गार्ड ने शॉकर को बाहर निकाला, शॉकर ने उसे मार दिया है।
और अब हम बैंक के बाहर आ पहुंचे हैं। पुलिस की गाड़ी आप देख सकते हैं। शॉकर अंदर बैंक लूट रहा है और हमें उसे रोकना है। Peter, I've been looking into the demons. Sounds like they've quietly established a power base in the vacuum left by Fisk. A vacuum I created by putting Fisk away. Jameson was right. The demons are my fault. But what were you supposed to do? Let Fisk keep godfathering? Are you okay? You sound even mopier than usual. I think I might have just lost my job. The city, Norman, actually pulled our funding. Oh, Pete. I'm sorry. If Harry were here, he could talk some sense into his dad. You'll find another source. Your work's too important. Thanks, MJ. Talk to you soon. तो गाइस इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो वेरी मच, और ऐसी हाइरोस एक्शन एडवेंचर के लिए इसका अगला पार्ट देखना मत भूलिएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो ज़रूर से लाइक करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट करें ताकि आपसे ऐसा कोई भी नया वीडियो मिस ना हो। शुक्रिया, और मिलते हैं अगली वीडियो में जहाँ पे हम शॉकर को वापस से फेस ऑफ करने वाले हैं। सी या।